I'm 24 years old and I'm happiest in my life right now. Hi everyone, my name is Anshuma and I have something to share with you guys. So I wanted to share that whatever the life I'm living right now, I never imagined when I was a teenager, because I belong from an area which was very not so good, and I never thought that I would be coming out of it and living my life and living my dream life and making myself feel proud to myself, not to anyone else. So as of now, I have my own car, living in a rented apartment which is decorated by me. It is a 2 BHK, living in the best state, surrounded by nature, all because of this society. यस, बिकॉज एक सोसाइटी में अगर एक लड़का 30 साल तक सिर्फ पढ़ाई कर रहा है और घर पे बैठा हुआ है इन द नेम ऑफ कि वो एक अच्छी जॉब सिक्योर करेगा, सब उसको सपोर्ट करेंगे, बट एज अ गर्ल यू कैन नॉट डू दैट. यू कैन नॉट सिट एट होम, पीपल विल टॉन्ट यू, इवन दो एट सम पॉइंट योर फ्रेंड्स विल से यार सेटल हो जा अब तो लाइफ में, कितना पढ़ाई करेगी, क्योंकि जाना तो दूसरे घर ही है. Girl, listen up. You don't have to do that because of the society's pressure. And I always thought in my head that I never want to be a burden on my parents. I started earning when I was 18 years old, and since then I never stopped. Because एक बार आपको वो पैसे की भूख लग जाती है ना, you always figure it out. आपको कैसे करना है लाइफ में, कैसे more money earn करना है. Because when I was 18, I started with tuitions, right? No, I guess 17 से मैंने tuitions शुरू कर दिया था. ये हर लड़की की एक पहली जॉब होती है. उसके बाद I worked in a shop which was paying me for 10 hours 3,000 rupees, and वो पूरा दिन खड़े होने की जॉब होती थी. Because I used to be working in a shop, clothing shop, जहाँ पे मतलब I was working as a sales girl. So from 3,000 to here working good, earning well, paying rent इतना सारा, I never imagined for myself. I just wanted to get out of that place. I wanted to be independent and spend my own money on myself. I never wanted to ask my father about anything. I never wanted कि मैं उनको कभी burden करूँ और feel कराऊँ. Even though he was not like that, but you know society. Obviously वो उनके behavior की वजह से ही मेरे mind में आया था, and इन सब चीज़ों की वजह से इतना pressure मैंने लिया कि मैं लाइफ में आज कुछ कर पाई हूँ. बट ऑब्वियसली एट सम पॉइंट यू फील एग्जॉस्टेड बिकॉज हाइपर इंडिपेंडेंस ऑल्सो हो जाती है. कभी कभी यू डोंट वांट एनीबडी टू हेल्प यू, बट धीरे धीरे वो चीज़ें चली जाएंगी व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ. बट टेक दैट थिंग, मेक सोसाइटी फील दैट यू आर worthy to have your own freedom. You are capable of earning your own money. You are capable of being independent. And I'm telling you, living away from your family plays a major role, because मैंने इतनी सारी चीज़ें अब तक सीख ली हैं 3-3.5 साल में अकेले रहने में, जो मैं कभी घर के वालों के साथ नहीं सीख सकती थी. So that's it. That's all I wanted to share. I hope आपको सुन के अच्छा लगा हो. Bye.